Hello, my dear friends. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to your very own channel, The Prime Skills. So today we are going to discuss about another important question or another important doubt which generally comes in the mind of every single speaker. जब भी कभी आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं या जब भी कभी आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन जनरली जो हमारे सामने आता है और जो सबकी प्रॉब्लम होती है वो है आई स्पीक टू फास्ट। विश्वास मानिए, जब मैंने इंग्लिश बोलनी शुरू की थी मैं भी बहुत ज़्यादा तेज बोलता था और अभी भी उस चीज़ का इफेक्ट कहीं ना कहीं मेरे कम्युनिकेशन में दिखाई देता है। बट मैंने प्रैक्टिस के माध्यम से और काफ़ी सारी चीज़ों के माध्यम से उस चीज़ को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है और वही मेथड्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिनको अप्लाई करके आप भी अपने पेस ऑफ कम्युनिकेशन या फिर पेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश जो है, इंग्लिश बोलने का जो एक स्पीड है, उसको आप स्लो कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आखिर ये पेस तेज होती क्यों है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा तेजी से इंग्लिश बोलते हैं, इतना फास्ट, इतना रैपिड फास्ट कि आप उनको समझ भी नहीं पाते। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप इस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं या फिर अगर आप इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो ऐसे कम्युनिकेशन का कहीं पे भी कोई मतलब नहीं रह जाता, बिकॉज कम्युनिकेशन इज समथिंग विच कैन बी अंडरस्टूड बाई एवरी सिंगल पर्सन, right? When you are able to communicate your message properly, only then you are considered to be a good communicator. So if you are speaking English very rapidly and nobody is able to understand you, believe me, there is no specific use of that communication, or you cannot call yourself a fluent or a good English speaker. So there are two basic reasons that why you speak so fast. Number one, you are too nervous. वेन एवर यू आर टू नर्वस, जब आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एंक्शियस होते हैं, उस सिचुएशन में हमारा जो माइंड होता है वो फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन में होता है। फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि हम बहुत तेजी से काम करने की कोशिश करते हैं, हम हड़बड़ा के बोलते हैं या फिर हम बहुत तेजी से बोल रहे होते हैं। तो जब भी कभी आप कहीं पे नर्वस होते हैं, किसी भी सिचुएशन में अगर आप नर्वस हैं तो आप बहुत तेजी से बोलने की कोशिश करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका जो आपके माउथ से लाइक यू विल बी अटरिंग और यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट इवन नोइंग, अनकॉन्शियसली वो बहुत तेजी से निकलेगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कई सारी चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये कि जब भी आप बहुत तेजी से बोलेंगे, आपके जो थॉट्स हैं वो आपके वर्ड्स को मैच नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत सारे पॉजेस लेंगे, अनडिजायरेबल पॉजेस जिनको बोलते हैं, और लोग उनको फिल करने के लिए फिलर्स का यूज करते हैं। फिलर्स कौन से होते हैं? जैसे कि आई नो, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट? सो इस सिचुएशन में आपको और भी कई सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे आप बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपको समझ नहीं पाएगा, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। जब आप एंक्शियस हैं, जब आप या फिर जब आप नर्वस हैं, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देयर आर सर्टेन मेथड्स व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ लेस एंक्शियस और लेस वरीड। यू कैन टेक द डीप ब्रेथ मेथड एंड देयर आर सम अदर मेथड्स टू व्हिच वी कैन डिस्कस लेटर ऑन. The second and the another important reason is that you are lacking confidence. अब आप ये कहेंगे कि सर, अगर मैं कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कम है तो मैं तेज कैसे बोल सकता हूँ, मुझे तो धीरे बोलना चाहिए। बट दिस इज द ट्विस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब आप बहुत ज़्यादा, मतलब जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और आप तेज बोलते हैं, तो तेज बोलने का एक बेसिक रीजन होता है कि तेज बोलने से आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ों को स्किप कर जाएंगे जिससे कि आपको वो बोलनी ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को किसी स्पेसिफिक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है तो वो उस वर्ड को बहुत तेजी से बोल के जाने की कोशिश करेगा, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति या फिर जो कि ऑडियंस है वो ये ना पकड़ पाए कि गलती कहाँ पे हुई है, राइट? तो गलतियों को छुपाने के लिए या फिर जब आपको ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा गलतियां करता हूं, उस सिचुएशन में भी आप तेज बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप धीरे बोलते हैं तो आपकी गलतियों को पकड़ना ज्यादा आसान होता है और ये आपको लगता है कि मेरी गलतियां कोई पकड़ ना ले, इसी वजह से आप तेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेजर रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा भी और कई रीजंस हो सकते हैं, बट दीज आर द टू मेजर रीजंस. Now we are going to talk about the solution, that how to overcome this problem of speaking fast. When I started speaking, I also have the problem that I used to speak so fast that at times people used to give me the feedback that whatever you talk about, you might be talking sense, but I'm not able to get you, right? So if you're also getting the feedback like this, I am going to tell you 4 important points which will definitely help you out in reducing your speed or reducing your pace of communication. So let's go ahead. Point number 1 is read one paragraph daily. Now you might ask or you might wonder how reading is going to help me out in reducing the pace. जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं तो उन सेंटेंसेस को आप स्लो पेस में पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें। जहां पे फुल स्टॉप हो वहां पे रुकें, थोड़ा सा गैप दें,
फिर नया सेंटेंस पढ़ें, फिर थोड़ा सा गैप दें, फिर नया सेंटेंस पढ़ें. एंड नाउ व्हेन यू आर रीडिंग यू कैन कंट्रोल योर पेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो ये आपको एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा कि जहां पे आप उस पेस में बोल सकते हैं जो पेस वास्तव में आपको रिक्वायर्ड है. जब आप बोल रहे होते हैं उस सिचुएशन में अपनी पेस को ध्यान में रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर आप रीडिंग एवरी सिंगल डे, इफ यू आर रीडिंग वन पैराग्राफ एट द डिजायर्ड पेस विच यू वांट टू एक्वायर, you will be habitual of speaking at that pace. Okay, so reading one paragraph every single day with that desired pace which you want to acquire in your language or in your communication is definitely going to help you out. मैं क्या किया करता था, मैं न्यूज़पेपर का कोई भी एक पैराग्राफ उठा लिया करता था और मैं उस न्यूज़पेपर के पैराग्राफ को उठाने के बाद एक न्यूज़ रीडर की तरह, न्यूज़ एंकर की तरह मैं उसको बोलने की कोशिश करता था. आई यूज्ड टू स्पीक दैट, राइट. तो जब आप एक न्यूज़ एंकर की तरह बोलते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि लाइक आप एक बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ऐसी पेस में बोलते हैं जिससे कि हर कोई व्यक्ति समझ पाए. तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि कौन सी पेस कम होती है, कौन सी पेस ज्यादा होती है, या फिर which पेस इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी द राइट, you need to watch the news readers. All those news readers can definitely, जो news readers होते हैं उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हर व्यक्ति को हमारी जो बातें हैं वो समझ में आ जाए, right? So when you are listening to them you can understand each and every word, and that's why that pace is considered to be the best pace, and you should always aspire to speak like that only. Speak like the news readers in English, right? Of course. Okay, so this was the first point. Now let's move to the second point. Now the second and important point is, which I have already discussed once, record yourself every single day, right? Switch on the camera of your mobile phone, put it in front of you, maybe in rear mode or the front mode, and try to speak something. Speak something maybe about maybe your introduction, or maybe a general story you can tell. You can talk about any specific person, you can appreciate somebody, or you can speak anything, right? Set a time frame. Let's say that you want to speak about 1.5 minute. 1.5 minute के लिए आप अपने आप को record कीजिए, and then try to watch that video and try to analyze your pace. Are you able to of course you would be able to understand yourself because you yourself have spoken, but try to show that video to somebody else. Maybe your brother, your sister, maybe your cousin, or your teacher, or your colleagues, and try to find out whether they are able to understand that video properly, because you don't get the opportunity to speak in front of people every single time, right? So if you don't have that opportunity, you can take the feedback in different forms. Okay, so record yourself and try to show that video to somebody else, and try to take the feedback seriously. If those people are not able to understand your English, probably you are going really fast. Okay, try to reduce your speed. Next time when you are recording, it will be you will be very conscious about that, right? And when you are conscious, you will be recording your video in a little bit lower pace. When you keep on doing it, getting the feedback, lowering the pace, getting the feedback, lowering the pace, until and unless you reach that specific pace which you require in your communication. So recording yourself can definitely help you out in reducing your pace to a very, very considerable level, right? Okay, I hope you're getting it. So let's dive into the third point. Third point is about shadowing the people you actually appreciate. Let's say that you are watching a TED Talk. And when you're watching a TED Talk, the speaker is speaking at such a pace and such a calm tone that you really like that person. Now, what you need to do, you need to shadow that person. Now, what is the meaning of shadowing? When a person is speaking, just listen to the entire TED Talk, okay? After that, after listening to the entire TED Talk, switch off the volume button, turn off the volume actually, turn the volume down, completely down to the zero, switch on the subtitles, and now try to speak yourself the way that person was speaking. Okay, since the video is on, only the volume is turned off, you would be able to see that the person is using certain body language, and you would be able to understand that what he is speaking at this moment through the subtitles. You need to shadow. Shadow means you need to speak exactly like him. You need to try to speak exactly like him, the way he was speaking, or the way she was speaking. Okay, when you shadow a person, or when you shadow such speakers who you really appreciate again and again, every single time, you improve a little bit every single time. Okay, shadowing is considered to be the very, very important method of improving your communication. So pick up any speaker, any TED Talk which you really love or like. Pick up any person, try to watch his videos, his or her videos, and then turn off the volume,
switch on the subtitles and try to shadow or speak the way that person was speaking through the entire length. Okay, and then if possible, try to record that also, and you can compare your communication with that person's communication. Keep trying again and again until and unless the both the recordings, I mean, like the person who is originally speaking and you are identical in nature or identical in pace. Of course, that would be very difficult or it may take a longer time, but again, you are on a journey to improve yourself. If you really want to improve yourself, shadowing is actually going to help you out. Okay. So let's go to the fourth point. Fourth and very, very important point is always be ready to take the feedback from people. Just try to understand one thing very clearly, my dear friends. Whenever you are learning, you are on a journey. And in a journey, you cannot go alone. Every single time, whenever you want to improve yourself, you always need the feedback either from yourself or from other people. So try to pick out people, try to pick out, like, let's say that you appreciate one person who actually speaks really good English. You can talk to him, you can try to, you can say, speak to him for some time and then ask for the feedback. What wrong did you notice in my communication? What would you like to give me? What suggestions would you like to give me so that I can improve or speak like you, the way you are speaking? What you do specifically to improve your communication? Ask these type of questions. Ask for feedback. And when you keep on asking for feedback from different people, I know that not every person is going to give you the true feedback because people abstain from just criticizing or abstain from giving true feedback. They believe that if they tell the truth, probably you might feel wrong or you might feel bad about it. But again, it doesn't happen, right? But out of all of them, there would be some people who will definitely give you the true feedback, and that feedback is definitely going to help you out in becoming a very good communicator. Okay, so these were the 4 points which I used to follow in order to reduce my pace of communication. I believe that these points are actually going to help you out in becoming a better communicator. Okay, thank you so much for watching up to this length, up to this time, and up to this moment. I believe that this video is definitely going to help you out. If there is any query or any doubt which you would like to ask me, please feel free to connect with me through the comment box of the Telegram channel or the YouTube or the WhatsApp channel. And we are actually going to start our 90 days spoken English challenge. And apart from that, we are also going to start different vocabulary sessions and again. So please stay connected. And like, you will definitely be finding out a lot of things because we are on a journey, right? We are on a journey to speak or to improve our communication. And I'm definitely going to help you out in becoming the person or becoming the communicator of your dreams. So let's stay together. See you in the next video. See you in the very next video very soon. And till then, have a good day ahead. Happy learning.